in first unit we had seen what is mean by economics, what is mean by managerial economics, then microeconomics, macroeconomics, then we had studied some of the theories. Okay. Now after studying the background of managerial economics, now we will start with I hope you have received the PPTs of first unit, na? Yes or no? Have you received PPTs? Have you received PPTs of first unit? I have already shared PPTs of with give you and analysis. Okay. In first unit, we have seen some of the theories, behavioral theories. Somebody's mic is on. Please off it. Uh, please off the mic. No, sir, we Okay. didn't receive any PPT. Okay. I have shared this PPT with Padale sir. Maybe today he will share with you. Okay. Okay, sir. Now we are going. Now we are going to discuss utility and demand analysis. This is the second unit of managerial economics. Now first of all, let us try to understand the what are the contents in first unit. So in second unit, what we have to study, you have to study about what is meant by utility, what is the utility analysis, then management of how you are going to manage your utilities, the law of diminishing marginal utility. Means diminishing means decrease in marginal utility, and what is mean by marginal utility, that also we can see in this unit. Then what are the indifference curves? On the basis of demand and supply, how indifference curves creates. Then we have to study about the consumer equilibrium, budget line, consumer surplus. Then we have to study about the demand concept, types of demands, determinants of demands, law of demand, elasticity of demands, then exceptions to the law of demand. Then we have to study about the elasticity, concept of elasticity, then forecasting its meaning, and how you are going to forecast your demand and forecast your elasticity, then level of demand forecasting, then criteria for good demand forecasting, methods of demand forecasting, then that is the survey methods, statistical methods, qualitative methods, and demand forecasting for new products. So this is about syllabus of second unit. So let us start with the utility. So actually let us see the what is the meaning of utility. So economics में utility का definition दिया है, meaning दिया है. What is this? So in utility is the capacity of commodity to satisfy the human wants. That is something about utility. It is the capacity of capacity of that commodity. For example, I want cake. So what is the capacity of that cake? To provide me utility. Okay, if I'm hungry at that time, if I get the cake at that time, the I will consume that many cakes which will give me 100% satisfaction. जब तक मुझे satisfaction 100% नहीं आता है, तब तक जो satisfaction 100% लेवल को आने के लिए जितना भी मैं केक्स कंज्यूम करूंगा, that is called as the utility of that cake to me. समझ में आ रहा है कंसेप्ट? मीन्स जब तक मेरा नीड फुलफिल नहीं होता है, तब तक कोई भी चीज अगर मैं यूटिलाइज करता हूँ, एक्सेस करता हूँ, कंज्यूम करता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज अ यूटिलिटी. जब मेरा नीड फुलफिल होगा, once my need is fulfilled, then utility of that product becomes zero. समझ में आ रहा है? For example, I need internet service to take the lecture. Getting this? तो मुझे लेक्चर लेने के लिए जितना भी इंटरनेट का जरूरी लगेगा, जितनी भी इंटरनेट की स्पीड की जरूरी लगेगी, दैट इज माय यूटिलिटी. ओके, once my lecture over, once my lecture over, at that time
I don't have a need of that utility. Means I can't use the internet for to take the lecture. Means मेरा जब डिमांड खत्म हो जाएगा, मेरी रिक्वायरमेंट जब फुल होती है, तब भी उसी प्रोडक्ट का यूटिलिटी जीरो होता है. जब मुझे उसकी जरूरी होती है, लेक्चर की जरूरी, लेक्चर लेना है इसलिए इंटरनेट लगना चाहिए. गेटिंग दिस? तो इंटरनेट की जरूरी मुझे 100% कब होगी? जब मैं 100% सेटिस्फाइड होगा. इफ आई एम एबल टू कंडक्ट द लेक्चर smoothly, that time I have utility of that internet is 100%. Getting this? So if there are the disturbances, if there are the disturbances in the at the time of taking the lecture due to internet connections or poor network, that time my utility decreases. My utility decreases. Means what? If I consume more and more products, if I consume more and more products, that's utility, that is the marginal utility decreases. Getting this? If you are so much hungry and you are finding, if you are so much thirsty, and if you find the one water bottle, and if that you drink 100% that 100% of that water bottle, means what? Your 100% efficiency or utility is one water bottle, which will give you 100% satisfaction or full satisfaction. जब तक मुझे full satisfaction नहीं मिलता, तब तक जितना भी मैं पानी पीऊंगा बॉटल से, that is my utility. Getting this? So in economics, utility is the capacity of commodity to satisfy the consumer wants. कंज्यूमर के वांट्स सेटिस्फाई करने के लिए जितना भी यूटिलाइजेशन होगा कि कोई किसी प्रोडक्ट का, दैट इज द यूटिलिटी बोलते हैं. यूटिलिटी इज द क्वालिटी इन द गुड्स दैट सेटिस्फाई द वांट्स. यूटिलिटी इज द क्वालिटी इनटू दैट पर्टिकुलर गुड दैट सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कस्टमर और द कंज्यूमर. जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो पानी पीने के बाद ऑटोमेटिकली जो मुझे फील होगा या मेरे में आएगा, दैट इज समथिंग अबाउट यूटिलिटी. And it is the wants satisfying capacity of goods or services. It is called as a utility. That is the wants satisfying the capacity. Satisfying the capacity of goods or services is called as a want satisfying. Means wants satisfying capacity यानी need based है. अगर मेरा नीड फुलफिल होता है उसी चीज से, तो वो मैं यूज करूंगा. अगर मुझे लगता है कि दैट कार्ड्स इंटरनेट कैपेसिटी और इंटरनेट रेंज इज नॉट गुड, means what? I am not having that much of utility on with, for example, Zio. So I can take the internet from Vodafone or Airtel. Getting this? The utility means what? The satisfying need of consumer जो fulfill करता है, that is something about utility. अभी utility हम लोगों को डिमांड फोरकास्टिंग में, डिमांड का एस्टिमेशन करते समय मुझे यूटिलिटी, लोगों का यूटिलिटी जानना बहुत जरूरी है. Okay, so it is the measure of satisfaction an individual gets from consumption of the commodity. Particular consumption, particular केक खाने से मुझे जो कुछ satisfaction मिल जाएगा, that satisfaction is nothing but utility of the demand, utility of the cakes. ठीक है? So the amount of consumption and the utility or the satisfaction with respect to that products, these both are correlated, positively correlated. जितना भी मुझे भूख रहेगी उतने मैं केक्स खाऊंगा, that is the utility of the cakes with respect to me. अभी फॉर एग्जांपल मेरे लिए how many cakes I can eat, for example one cake. How many cakes, for example, my daughter can eat, it will be small portion of that cake. Means what? Utility of the person depends upon the need. Getting? And capacity to consume it. जितना भी मैं केक्स, जितने केक्स मैं खा सकता हूँ उतना केक्स मेरा कलीग नहीं खा सकता. Because utility is different or utility changes from person to person. लोगों के कैपेसिटी के हिसाब से, लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूटिलिटी लोगों की चेंज होती है. Getting this? For example, to take a lecture, I need a laptop. That is the utility of that laptop is to me, it is 100%. But being a student, you may not require the laptop. So for me, utility of laptop is 100%. But for you, utility of laptop is 0.
So in your case, you have to depend on mobile phones. You are conducting my session through the mobiles. Getting this means what? मेरे लिए लैपटॉप का यूटिलिटी 100% है, जो कि आपके लिए 0% है. Getting this? आपके लिए मोबाइल का यूटिलिटी 100% है, जो कि मेरे लिए 0% है. Getting this? So utility changes from customer to customer, commodities to commodities. Getting this? उसके बाद, for example, I can eat two cakes. That is my utility. But I can eat two cakes, but I can eat for example 4 ice creams. अगर मैंने केक नहीं खाया, तो in place of that particular cake I can consume 4 or 6 ice creams. यानी प्रोडक्ट वाइज भी यूटिलिटी चेंज होती है. हर एक प्रोडक्ट का यूटिलिटी अलग अलग होता है. समझ में आ रहा है कंसेप्ट? सो that is something about utility. So it is the measurement of usefulness that a consumer obtains from the goods. एक पर्टिकुलर गुड से मुझे उसका यूटिलिटी या यूजफुलनेस कितना है, दैट इज समथिंग अबाउट यूटिलिटी. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द यूटिलिटी, क्योंकि यूटिलिटी के बेसिस पे डिमांड फोरकास्टिंग हम लोगों को करना है. So next characteristics of utility is the measure of how much one enjoys movie, favorite food or other goods. कितना enjoy कर सकता है, that is the utility. Then utility of good differs from consumer to consumer. एक दूसरे से चेंज होती है. यूटिलिटी हर एक पर्सन का अलग अलग हो सकता है. प्रेफरेंसेस हर एक पर्सन के अलग अलग हो सकते हैं. Getting this? Then it keeps on changing the same consumer due to change in the amount of desire. It keeps changing for the same consumer due to change in the amount of desire. जैसे कि मेरा डिजायर खत्म हो गया, जैसे कि मेरा फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई रिक्वायर द लैपटॉप टू कंडक्ट द लेक्चर. दैट इज माई 100% डिजायर कि मुझे लैपटॉप से ही लेक्चर लेना है. मीन्स आई टू फुलफिल दिस नीड ऑफ कंडक्टिंग द लेक्चर आई वॉन्ट द लैपटॉप. उसके बाद फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्टेड टू send some information to my friend at that time, my utility of laptop decreases. So I have two options: either I can send the communication from laptop or mobile. Getting this? Out of these two products, I will prefer one product which will satisfy my need. So in that case, I will be more depend on mobile rather than the laptop. Means what? Utility of one product decreases when utility of other product increases. समझ में आ रहा है? अगर हमारे प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं, दैट टाइम डिमांड टू डिमांड और प्रोडक्ट वाइज यूटिलिटी भी कम ज्यादा होती है. ओके, नाउ इट कीप्स ऑन चेंजिंग फॉर द सेम कंज्यूमर ड्यू टू चेंजेस इन द डिजायर. जैसे कि उसी प्रोडक्ट का मेरा डिजायर कम होगा, उसके हिसाब से मेरी यूटिलिटी भी कम होगी. ओके, इट इज डिपेंडेंट अपॉन द ह्यूमन वांट्स. आपको क्या चाहिए, ह्यूमन वांट के बेसिस पे हर एक ह्यूमन का यूटिलिटी चेंज होती है. एंड यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव इन नेचर. utility is subjective nature and it depends upon the utilize or uses of the particular product, the requirement of the particular product. That is something about utility. Okay, now there are two methods to measure the utility, okay, of the demand or to analyze the demand of the customers. So first is this is classified into cardinal approach and ordinal approach. Now cardinal approach means what? One can be measured. In cardinal approach, it can be measured. Utility can be measured. That is in cardinal approach. And in ordinary approach, utility cannot be measured. Try to understand. Utility is classified into two approaches. One is cardinal approach and another is ordinal approach. In cardinal approach, utility can be measured. And in ordinal approach, utility cannot be measured. Okay, in terms of units. So this, in cardinal approach, one believes that it is measurable. Okay, and one can express her or his or her satisfaction in cardinal numbers. For example, 1, 2, 3, 4. Okay, we cannot measure in terms of units. समझ में आ रहा है?
सो इट टेल्स द प्रेफरेंसेस। तो इससे ये मेरा मुझे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आई कांट काउंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, आई कांट काउंट इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ द capacities. That is something about cardinal approach. I can say that this is beneficial, more beneficial than this product, but I can't measure its utility in terms of amounts. Okay. Now in ordinal approach, what we can do, we can compare with the products. We can compare with the products. So one can express his or her satisfaction with respect to ranking. So this is first rank, this is second rank, this is third rank. So this is something about ordinal approach of the utility. Now next is the so utility is classified into two groups: cardinal approach and ordinal approach. Now in case of total utility or types of utility is classified into total utility, marginal utility, and average utility. Now see the what is meant by total utility. So this is a sum of total satisfaction from the consumption of a specific goods. It increases as more goods in consumed. So this is the total utility of the person. For example, if I am hungry at that time, I can drink one, two, or three bottles. Okay. So my total utility is equal. First I will drink one bottle. Then I will check my hunger level. If I'm not satisfied, then I can demand next bottle, that is U2 utility. If again I'm not satisfied, then I will use third bottle to drink. If I'm not satisfied with third bottle, then I can use fourth bottle. So मेरा total utility कितना हो गया? Bottle number 1 plus bottle number 2 plus bottle number 3 plus bottle number 4. That is called as a total utility. So my total utility becomes 4 bottles. If I am hungry, if I am thirsty. Okay. If I am not thirsty, at that time, if somebody asks me to drink again the water, तो क्या हो जाएगा? जब मेरा हंग्री लेवल था, जब मुझे नीड थी, तब मैंने 4 बॉटल खत्म की। अभी मुझे उतना जरूरी नहीं है, तो कैन आई again consume 4 bottles? Not possible ना. So probably my total utility may be 2 bottles. समझ में आ रहा है? So probably और 2 बॉटल लेने के बाद अगर somebody ask me to again have 1 bottle, at that time my total utility becomes 0. मेरा टोटल यूटिलिटी पहले ये हंग्री सिचुएशन में मेरे 4 बॉटल्स थे। अभी जैसे जैसे मैं बॉटल्स कंज्यूम करूंगा, उसके हिसाब से मेरा यूटिलिटी भी कम हो जाएगा, मेरा मार्जिनल यूटिलिटी कम होते जाते हैं। सो टोटल यूटिलिटी यानी इट इज द consumption level of bottle number 1, 2, 3, 4. So total utility is equal to 4 bottles. So in this way, we can calculate the total bottles or total utility. Now, next is the marginal utility. So what is the difference between total utility and marginal utility? Now, see, the total utility is nothing but the total satisfaction from the goods or services which you are consuming. That is the total utility. अभी देखिए marginal utility क्या है? So in marginal utility, it is the additional satisfaction gained from each extra unit of consumption. Additional satisfaction gained from each extra unit of consumption. For example, if I am thirsty, at that time I will utilize or I will drink 1 bottle. That is my satisfaction. Okay. Uske baad when I drink second bottle, at that time I could get some satisfaction, additional satisfaction. That is called as additional satisfaction. So once I drink one additional bottle, so whatever satisfaction I will get from that satisfaction, from that bottle, it gives me additional satisfaction due to extra unit. And this marginal utility decreases with each additional increase in the consumption. जितना भी हम लोग additional consumption करोगे, उसके हिसाब से उसी प्रोडक्ट का नीड मेरा कम 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 होते जाए। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, इफ आई एम हंग्री, एट दैट टाइम फर्स्ट I will take or I will consume one cake. Okay, because I am hungry. So that one cake will give me 100% satisfaction.
ओके, उसके बाद यानी आप अगर हंग्री हो तो मुझे केक की जरूरी कितना है, 100% है। उसके बाद एक बार एक केक आपके पेट में गया और दूसरा केक अगर किसी ने आपको दे दिया तो उसका यूटिलिटी आपके लिए 100% नहीं है, क्योंकि उतना जरूरी वो केक नहीं है। आपको दिया तो चलेगा, नहीं दिया तो भी चलेगा। मीन्स व्हाट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड प्रोडक्ट डिक्रीजेस, क्योंकि ऑलरेडी एक आपके पेट में है। जैसे कि पहले आपका पेट खाली था, इसलिए फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट केक मार्जिनल यूटिलिटी वाज 100% था पहले केक के लिए। जब आप दूसरा कंज्यूम करोगे तब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड केक डिक्रीजेस, क्योंकि एक ऑलरेडी आपके पेट में है, उतना आपको उसकी जरूरी नहीं है, नीड नहीं है। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? तभी भी आप लोगों ने आपने वो दूसरा केक खाया तो उसका यूटिलिटी कम होती है आपके सेहत के लिए। अगर अभी आपके पेट में 2 केक है एंड इफ समबडी ऑर्डर थर्ड केक, तो आप क्या बोलते हैं, नहीं नहीं यार अभी बस हो गया, अभी मेरे से नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ थर्ड केक डिक्रीजेस इफ यू कंज्यूम इट। उसका नीड जितना है, सो इंपॉर्टेंस डिक्रीजेस। गेटिंग दिस? सो इफ देर आर 3 cakes in your stomach and if somebody asks you to take next cake, that time its utility becomes zero. आप क्या बोलोगे, अभी मेरे से नहीं जाएगा। इसका मतलब utility of that fourth cake will become zero. So marginality, क्योंकि क्या है, अगर आपने फोर्थ केक खाया तो वो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। दैट इज समथिंग अबाउट मार्जिनल यूटिलिटी। मीन्स व्हाट, वंस यू कंज्यूम मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स, तो आपका यूटिलिटी कम, आपके प्रोडक्ट आप कंज्यूम करोगे लेकिन उसकी नीड, आपके लिए जो होने वाली नीड है वो कम 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 होते जाए। दैट इज द दैट इज द relationship between your total utility and marginal utility. So this marginal utility decreases with each additional increase in the consumption of goods. जैसे कि हम लोग एडिशनल यूनिट कंज्यूम करोगे उसके हिसाब से मेरा उसी प्रोडक्ट का मार्जिनल यूटिलिटी कम कम होते जाएगा। ओके, सो मार्जिनल यूटिलिटी इज डिनोटेड बाय MU इज इक्वल टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी। आपका टोटल यूटिलिटी कैसे चेंज हो रहा है, एंड चेंज इन द टोटल क्वांटिटी। टोटल यूटिलिटी आपका कम 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 होके जाएगा जैसे कि आप ज्यादा प्रोडक्ट्स खाओगे या परचेस करोगे, लेकिन उसके हिसाब से चेंज इन टोटल क्वांटिटी, तो उसके हिसाब से मेरा टोटल यूटिलिटी कैसे चेंज हो रहा है और मेरा टोटल क्वांटिटी भी कैसे मैं कंज्यूम कर रहा हूँ। ओके, टू satisfy the satisfy the need. So marginal utility is the ratio of change in total utility divided by changes in the quantity. So this is how we can calculate the marginal utility. We have to see this marginal utility next lecture. Okay, so just try to understand the basic concepts of marginal utility and total utility. Next is the average utility. So one can obtain this average utility by dividing the total units of the consumption divided by total number of units. 10 केक्स मेरे पास में है और उसमें से मैंने 3 खाए, so this is the total number of consumption is 3 cakes, and how many cakes are there available in front of you? 10 cakes. So 3 divided by 10 is equal to your average utility. समझ में आ रहा है? So this is how the types of utilities is. Okay, do you have any doubt regarding to this utility, total utility, marginal utility? Can you just identify the difference between total utility, marginal utility, and average utility? Do you have any doubt? Otherwise, we will go to the next slide, because this depends upon next slide depend upon these types of utility. No, sir. Okay, so you can just identify the difference between total utility, marginal utility, and average utility. अभी मैंने जो बताया कि जैसे कि मैं फर्स्ट, अगर इफ आई एम हंग्री टू मच एट दैट टाइम क्या होता है, आई विल हैव वन प्रोडक्ट। तो ये एक जो प्रोडक्ट जितना भी मुझे सेटिस्फेक्शन देता है ना, उतना प्रोडक्ट, उतना सेटिस्फेक्शन मैंने दूसरा प्रोडक्ट खाने से नहीं मिलता है। उतना प्रोडक्ट, उतना सेटिस्फेक्शन मुझे तीसरा प्रोडक्ट खाने से नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा नीड कम 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 होते जाएगा। जितने भी मैं ज्यादा यूनिट्स परचेस करूंगा, कंज्यूम करूंगा, उसके हिसाब से मेरा क्या हो जाएगा, मेरा नीड कम होता है। द सेम थिंग इज explained in the diminishing law of diminishing marginal utility.
अभी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी क्या है? डिमिनिशिंग यानी डिक्रीजिंग होता है, डिक्रीज होता है, कम होता है। क्या कम होती है? मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है। मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स एडिशनल बेनिफिट जो हम लोग लेते हैं उसी प्रोडक्ट से, उसका यूटिलिटी, जैसे कि हम लोग नया एक्स्ट्रा यूनिट परचेस करोगे, एक्स्ट्रा कुछ प्रोडक्ट परचेस करोगे, तो उसका यूटिलिटी कम 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 होते जाते हैं। ओके, सो दैट वी हैव टू स्टडी इन डिमांड फोरकास्टिंग। अभी लॉ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लॉ. This law describes how the first unit of consumption of good or service yield more utility than second and subsequent unit, with continuing reduction for a greater amount. So marginal utility क्या बोलता है? How the first unit of consumption of good or services yield more utility. पहला जो प्रोडक्ट आप लोग परचेस करोगे वो क्या करेगा? आपको ज्यादा यूटिलिटी देगा। जैसे कि आप प्रोडक्ट बढ़ाओगे तो उसकी यूटिलिटी कम हो जाएगी। मेरे लिए उसकी जो नीड है ना, वो नीड इज नथिंग बट यूटिलिटी, और रिक्वायरमेंट इज नथिंग बट यूटिलिटी। जैसे कि सेकंड प्रोडक्ट परचेस करेगी तो उसका कुछ यूटिलिटी रहेगा, थर्ड प्रोडक्ट परचेस करेगी उसका सेकंड से भी कम यूटिलिटी रहेगा, फोर्थ प्रोडक्ट परचेस करोगा तो थर्ड से भी कुछ कम यूटिलिटी रहेगा, टेंथ प्रोडक्ट परचेस करोगा तो ऑलमोस्ट यूटिलिटी जीरो हो जाएगा। Getting this? So at this moment, when utility becomes zero, means what? You don't have a need of that particular product. आपको उसी की जरूरी नहीं लगेगी। Means what? Why there is no need of this extra unit? Because marginal utility becomes zero. उसी प्रोडक्ट का मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होता है आपके, इसलिए आपको वो प्रोडक्ट की ज्यादा जरूरी नहीं होती। तो डिमांड फोरकास्टिंग में हम लोगों को मार्जिनल यूटिलिटी कंज्यूमर का प्रोडक्ट का देखना है कितना है। Accordingly, we will decide whether to manufacture or not to manufacture, whether to stop the production, or on the basis of this, you will manage your production system. Accordingly, you will supply the goods and services into the market on the basis of marginal utility. और ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? जितने भी प्रोडक्शन ज्यादा होगा उतना ही उसका यूटिलिटी कम हो जाएगा, उतना ही उसका इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। If the product is cheaply available, means utility will be again becomes zero. If the product is not available into that much of quantity, automatically the importance of that product increases and utility becomes higher. Okay. So therefore, the fall in marginal utility as consumption increases. Fall in marginal utility में यानी marginal utility decrease होना increase होता है, यानी marginal utility increases is, sorry, the fall in marginal utility as consumption increases is known as diminishing marginal utility. जितना भी कंजम्पशन, जितना भी रिक्वायरमेंट, जितना भी परचेस बढ़ेगा, उतने हिसाब से उसकी उसी प्रोडक्ट का मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है, उसको बोलते हैं डिमिनिशिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। दिस कंसेप्ट इज यूज्ड बाय इकोनॉमिक्स टू डिटरमाइन हाउ मच ऑफ गुड्स अ कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेस। क्यों पढ़ना है कि एक बंदा कितने प्रोडक्ट्स परचेस कर सकता है, on the basis of that you can decide your demand of your product. Okay, the law of diminishing marginal utility states that the amount of satisfaction provided by the consumption of every additional unit of a goods decrease as increase in the consumption. एडिशनल यूनिट का डिमांड, जैसे भी हम लोग जैसे जैसे भी हम लोग कुछ नए प्रोडक्ट्स, नए एडिशनल यूनिट्स परचेस करोगे, उसके हिसाब से उसका मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है। So this marginal utility is the change in utilities. It is the change in utility derived. How you have calculated this change in utility? Derived from the consumption of additional unit of the foods. एक एक्स्ट्रा खाने से आपका प्रोडक्ट, आपका नीड कितने कम हो जाएगी। So you will reach at the level at which you should be not having a need of that product. एक केक खाया, दो केक खाया, तीन केक खाया, चार केक खाया, मेरा अभी पेट भर गया, अभी अगर पांचवा केक किसी ने दिया तभी भी मैं नहीं खाऊंगा, बिकॉज माई मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स जीरो। ओके, तो पांचवा केक अगर किसी ने बोला कि चलो ठीक है, मैं आपको 200 रुपए देता हूँ, ये एक केक खा के दिखाओ, ये बनाना खा के दिखाओ, so you will be not in a position to eat that banana or to eat that cake because marginal utility becomes almost zero.
उसी प्रोडक्ट का नीड 0 होता है एंड यू विल बी नॉट इन पोजिशन टू कंज्यूम दैट प्रोडक्ट, क्योंकि उसी प्रोडक्ट का बिकॉज ऑलरेडी 3 बनानास आर देयर इनटू योर स्टमक, सो यू डोंट हैव नीड ऑफ 4th और 5th बनाना, बिकॉज उसकी जरूरत आपके लिए नहीं है, इसलिए उसकी मार्जिनल यूटिलिटी आपके लिए कम होगी। सो दिस मार्जिनल यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन माय कंजम्पशन, मैंने कितना खाया है ऑलरेडी, उसके हिसाब से अगले वाले प्रोडक्ट का मार्जिनल यूटिलिटी का रेट डिपेंड होता है। Okay, so the law of diminishing marginal utility states the marginal utility gradually decreases. Marginal utility क्या होती है? Gradually decrease होता है with a level of consumption. जितना भी हम लोग कंजम्पशन करेंगे उसके हिसाब से उसी प्रोडक्ट का मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है। यूटिलिटी being defined as a satisfaction of the benefit. कितना आपको satisfaction मिलता है। Now, let us try to understand what is the difference between total utility and marginal utility. So total utility is the aggregate or it is the sum of measure of satisfaction gained by the consumption. Total utility क्या है? Sum है, addition of satisfaction, additional of measure of it is the aggregate measure of satisfaction gained from the consumption. तो consumption से मुझे कितना satisfaction मिल गया? U1, U2, U3, that is total utility. अभी marginal utility क्या है? देखिए, it is a measure of the change in satisfaction. Change in satisfaction. Try to understand these 3 words. Change in satisfaction gained from consumption as a result of change in consumption. Consumption में जैसे कि मेरा change होता है, 3 की जगह पे 4 होता है, उसके हिसाब से marginal utility में भी 100 की जगह पे 80 होगा, 80 की जगह पे 70 होगा, 70 की जगह पे 60 होगा। समझ में आ रहा है? जैसे कि मेरा कंजम्पशन बढ़ेगा उसी रेट से मेरा मार्जिनल यूटिलिटी, मेरी डिपेंडेंसी, मेरी नीड भी कम हो जाएगी। यानी मेरा कंजम्पशन बढ़ेगा और मेरी नीड कम हो जाएगी। मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस विथ अमाउंट ऑफ योर कंजम्पशन। Okay, so how it is going to be calculated? For example, MU stands for marginal utility of X is equal to total utility of X minus total utility of X minus 1. X number of units की total quantity कितना है? For example, total utility from the 4 minus total utility minus 4 minus 1 is nothing but 3. So that is the marginal utility, is the difference between two total utilities. Marginal utility is the difference between two total utilities. Okay. Now, the marginal utility is gained from the X unit of the consumption is equal to the difference between the total utility gained from the X unit of consumption and total utility gained from the X minus 1 utility. यानी थर्ड में से थर्ड के कंजम्पशन करने के बाद मेरा टोटल यूटिलिटी एंड फोर्थ के कंजम्पशन करने के बाद मेरा होने वाला टोटल यूटिलिटी, और ये दोनों में से थर्ड एंड फोर्थ के दौरान चेंज होने वाली मेरी मार्जिनल यूटिलिटी, दैट इज समथिंग अबाउट मार्जिनल यूटिलिटी। अभी देखिए, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ हम लोग एक केस स्टडी से elaborate करेंगे। Just read this slide. I have given one example. Just try to understand this case study. Okay. So I'll give you 1 minute or 2 minutes time to understand this case study which is in front of you. Just try to read it.
Done, sir. Okay, so this is the case study where utility and marginal utility and consumptions are given. Just I will read once again. Ram is extremely hungry and he goes to the restaurant that offers the buffet. Now he loads up his plate with food and start eating. Okay. The amount of satisfaction gained by the Ram from the plate of food is directly proportional to his hunger level. जितना भी भूख लगी उतना वो plate खाएगा. Okay. Now, therefore, first plate of food will give Ram more satisfaction, that is more utilization than the second plate, because second plate की जरूरी उतनी नहीं है क्योंकि एक प्लेट ऑलरेडी उसके पेट में है. Second plate of food, which in turn will give Ram more satisfaction than the third plate. जितना भी थर्ड का इंपॉर्टेंस राम के लिए रहेगा उतना इंपॉर्टेंस फोर्थ प्लेट की नहीं रहेगी, बिकॉज नाउ वो राम इज नॉट हैविंग दैट मच ऑफ नीड. ओके, क्योंकि उसकी कुछ प्राइमरी नीड फुलफिल हो चुकी है. द सिचुएशन अबाउ ऑकर्स बिकॉज ईच प्लेट ऑफ फूड रिड्यूसेस राम्स हंगर लेवल. जितना भी राम ज्यादा खाएगा उतना ही उसकी हंगर लेवल डिक्रीज होगी. और एक स्टेज ऐसे आएगी उसके उसी स्टेज पे उसको कुछ भी अच्छा खाने के लिए दिया तभी भी राम नहीं खा पाएगा, क्योंकि उसका ऑलमोस्ट यूटिलिटी फुलफिल हो चुका है और उसका मार्जिनल यूटिलिटी अभी 0 हो चुकी है. समझ में आ रहा है? तो ये सेम सिचुएशन हमारे कस्टमर के बारे में भी, हमारे मार्केट में भी होती है डिमांड फोरकास्टिंग. सो at the time of starting the manufacturing activity, at the time of supplying the demand of the product in the market, you need to understand the utility of the demand. Okay, the reduction in the hunger level results in the less satisfaction from the plate of food being consumed. So each plate of food fills ram up and thus decreases the amount of satisfaction he will get from the plate of food that follow. Okay, so accordingly the diminishing the marginal utility means what? Marginal utility decreases upon number of consumption. We just look towards the graph. So here I have shown the graph of total marginal utility, that is the total utility and marginal utility. Okay, so on x-axis I have taken 1 plate, 2 plate, 3 plates, 4 plates and 6 plates, and on the basis of this I have shown the total utility of ram, and the blue line shows the total utility. Okay, and this violet line shows the marginal utility, and they are crossing with each other, they are not going parallelly, they are intersecting with each other. इसका मतलब जितना भी हम लोग ज्यादा कंज्यूम करोगे, फॉर एग्जांपल let us look at the plate number 1. So for plate number 1, if Ram consumes first plate at that time, his marginal utility is, for example, 40%. Okay, then when he add second plate, that time his marginal utility comes to the 35%. When he add third plate, that time his marginal utility, his total utility is increasing. Total utility becomes 1 plus 2 plus 3, यानी 1 plus 1 plus 1 is equal to 3 plates हो गया total utility. But marginal utility कितना हो गया? That is up to 30. When he add fourth plates, at that time total utility is equal to 4 plates, but marginal utility is equal to 30%. Okay, if he add fifth plate, at that time total utility is equal to 5 plates, but marginal utility comes to the 25%. When he adds sixth plate, that time total utility is equal to 6 plate and marginal utility is equal to 20. Means what? जैसे कि राम और कुछ प्लेट्स खा जाएगा उसके हिसाब से उसका मार्जिनल यूटिलिटी 0 तक नीचे आएगी. जब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी, at that position ram will not consume further. जो पॉइंट को, जो स्टेज को मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है तभी राम एडिशनल प्लेट लेना बंद करेगा, तभी राम एडिशनल प्लेट्स लेना बंद करेगा. सो डिमिनिशिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बताता है? जैसे कि कोई भी कंज्यूमर
एडिशंस कुछ प्रोडक्ट्स बेचता है, तो नंबर ऑफ क्वांटिटी जितना भी वो ऐड करेगा उसके हिसाब से उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होगा। तो एज अ कस्टमर, एज अ कंपनी, एज अ एनालिस्ट और एज इकोनॉमिक्स, हमको किसकी स्टडी करना है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कब जीरो होती है तब तक ही उसको सप्लाई करना है। जो पॉइंट को मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगी तभी जाके वो कंज्यूमर उसी प्रोडक्ट का परचेसिंग या यूटिलाइजेशन नहीं करेगा। So this is the inverse relationship between total utility and marginal utility that we must understand. As we increases the number of products to be purchased, okay, accordingly in the same proportion my marginal utility is going to decrease. Okay, so this is the graphical representation of law of diminishing marginal utility. Do you have any doubt regarding to this? कुछ समझ में नहीं आया वगैरह ऐसा कुछ है तो जल्दी बताओ, otherwise we will go to the next slide. Do you understand this graph? Yes or no? Yes, students? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, so you just identify the difference between total utility and marginal utility. जो कुछ हम लोगों ने फॉर्मूला कुछ देखे थे ना, उसका यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है. Now, with respect to this, we have one more thing, that is the indifference curve. I think हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 में भी एक ऐसा ग्राफ देखा था. 1 minute, I will show you the graph. ये वाला ग्राफ देखा था ना, एक कौन सा तो मॉडल था उसमें हम लोगों ने देखा था. आई थिंक लास्ट मॉडल में देखा था, मिलियम सन्स का जो मॉडल था उसमें शायद हम लोगों ने ये देखा था. तो दैट इज समथिंग अबाउट इंडिफरेंस कर्व. इंडिफरेंस, तो देखिए यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व क्या बोलता है. देखिए हर कोई प्रोडक्ट लोगों को अलग अलग सेटिस्फेक्शन दे सकता है. फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो यूटिलिटी है लैपटॉप का, that satisfaction level from the laptop is something different. Satisfaction level from me, from the mobile is different. Satisfaction level from the desktop computer is different. तो यहाँ पे indifference curves जो होते हैं वो अलग अलग सबकी satisfaction level. So indifference curves depends upon the your satisfaction level. For example, IC1 stands for satisfaction level from let us say desktop computer. IC2 is the my satisfaction level is more than satisfaction level from the laptop is more than the satisfaction level from the computer. So IC2 stands for the satisfaction level from the laptop. और मेरा satisfaction level लैपटॉप और कंप्यूटर से मोबाइल से भी ज्यादा हो सकते हैं, that is something about IC3. तो satisfaction level of various product should not cross with each other. ये इक्विलिब्रियम जाते हैं, ये सेटिस्फेक्शन लेवल इक्विलिब्रियम जाते हैं. इसका मतलब मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल जो कि डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज करने का है उससे भी मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल मुझे ज्यादा किस में आ जाएगा, लैपटॉप के. बिकॉज इट इज वेरी इजी टू हैंडल, एंड इट इज हैविंग सिमिलर फीचर्स एज कंपेयर टू डेस्कटॉप कंप्यूटर्स. उसके बाद it will give me mobile utilization of mobile will give me more satisfaction than my laptop में मोबाइल मेरा जेब में बैठता है लेकिन लैपटॉप मेरा जेब में नहीं बैठता है ना. so it is not that much easy to handle the laptop as compared to mobile. so satisfaction level of mobile will be higher than satisfaction level of laptop. समझ में आता है. इसलिए each and every product will give you different satisfaction level, and this satisfaction level you can't compare. The satisfaction level you can't compare, or you can't make the adjustment of the satisfaction level with respect to your product. तो हम लोगों को इसमें क्या देखना है, यही ये satisfaction level हम लोगों को indifference curve से स्टडी करनी है. So just try to understand the satisfaction indifference curve, a popular alternative to the marginal utility analysis. Marginal utility analysis को alternative क्या है? That is something about your indifference curve. So through the whatever marginal utility you are understanding, through the whatever is the demand forecasting you are understanding through the marginal utility, the same kind of things you can understand with the help of indifference curve. So this indifference curve is
based on the consumer preferences. The consumer, how consumer is going to give preferences accordingly, the indifference curve we can plot. We can plot this indifference curve. We cannot measure human satisfaction in monetary terms. तो satisfaction level we can't count in terms of money. तो मुझे 100 rupees का satisfaction मिल गया, नहीं है. Satisfaction level, it may be present or absent, or it may be in kind of percentage. And you can't measure this satisfaction level in terms of money or in terms of fees or in terms of lakhs. Okay. This approach assigns an order to consumer preferences. ये approach क्या करता है? Consumer preferences का orders बताते हैं, rather than measure them in terms of money. In terms of money में measure करने से ये preferences बताते हैं. Indifference curve. An indifference curve is the curve that represents all the combinations of goods that give the same satisfaction to the consumer. Indifference curve is the curve that represents all the probable combinations of the goods which will give me equal amount of satisfaction or the same amount of satisfaction. Okay, for example, जितना satisfaction मुझे 2 केक खाने से मिलेगा, उतना ही satisfaction मुझे 4 आइसक्रीम खाने से मिलेगा. It means what? To have a same kind of satisfaction, either I have to consume 2 cakes और 4 आइसक्रीम्स. तो दोनों में से एक कोई भी मुझे मिलेगा. जितना सेटिस्फैक्शन मुझे आइसक्रीम खाने से मिलता है, 4 आइसक्रीम खाने से मिलता है, उतना सेटिस्फैक्शन फिर एक बार मुझे लाने के लिए मुझे 2 केक्स खाने पड़ेंगे. क्लियर अबाउट दिस? सो दैट शोज द क्या सॉरी इट इज द कॉम्बिनेशन कि कौन से प्रोडक्ट्स है, कौन से प्रोडक्ट आपको कॉम्बिनेशन में इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं. गेटिंग दिस? So that is told with the help of indifference curve. Since all the combination give the same amount of satisfaction, the consumer prefer them equally. अगर इसी तरीके से अगर ये कॉम्बिनेशन आपको इक्वल सेटिस्फेक्शन देता है तो अकॉर्डिंगली कंज्यूमर प्रेफर देम इक्वली, तो उतना ही वो प्रेफर करेगा. एक तो मैं केक खाऊंगा, अगर केक अवेलेबल नहीं है तो मैं आइसक्रीम की तरफ जाऊंगा. गेटिंग दिस? So consumer will decide the preferences. If the cake is not available, my preferences will be cake. If the cake is not available, I will go to the ice cream. If the ice cream is not available, I will go to the, I will either see, I will consume 1 cake or 4 ice creams or 6 kulfis. समझ में आ रहा है? I will cake. So this 1 cake, 2 ice creams and 6 kulfis, they will give me equal amount of satisfaction. समझ में आ रहा है? So it depends upon the number of that is the availability of the particular material. If the particular product is not available into the market, I will shift my demand towards the next product which will give me same kind of satisfaction. For example, I have 2 brands, Cotton King and Peter England. अगर मुझे कॉटन किंग का शर्ट पसंद नहीं आया या अवेलेबल नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल पीटर इंग्लैंड के पास जाएगा. सो पीटर इंग्लैंड विल गिव मी इक्वल सेटिस्फेक्शन व्हाट कॉटन किंग इज गोइंग टू गिव मी. समझ में आ रहा है? तो इंडिफरेंस कर्व ये दिखाता है आपको, जैसे कि एक प्रोडक्ट का डिमांड कम होती है या बढ़ती है तो दूसरे प्रोडक्ट का डिमांड ऑटोमेटिकली कम होती है. जैसे कि once I am satisfied with Cotton King brand, then at that time automatically मेरा पीटर इंग्लैंड का प्रेफरेंसेस 0 होता है या कम होता है. समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, here is an example to understand the indifference curve better. Peter has 1 unit of cake and 12 units of ice cream. तो जितना सेटिस्फेक्शन पीटर को एक केक का यूनिट देता है, एक केक देता है, उतना ही सेटिस्फेक्शन 12 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम भी देता है. Okay, now we ask Peter how many units of ice cream is he willing to give up in exchange of additional unit of cake. Okay, cake. So this level of satisfaction remains unchanged. ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, एक तो एक केक खा सकता है, along with this he will get the 12 number of ice creams. अगर उसको केक को पीटर को 2 केक चाहिए एट दैट टाइम, तो अगर उसको वो एक एडिशनल केक चाहिए तो वो कितना उसके आइसक्रीम में से कितना कॉम्पेंसेट कर सकता है. तो व्हाट ही विल डू,
he will make the adjustment with some units of the ice cream. उसको केक चाहिए, एक तो ऑलरेडी उसने की लिया है, अगर दूसरा और भी एक केक उसको चाहिए तो वो क्या करेगा, आइसक्रीम में से कुछ यूनिट्स वो कॉम्पेंसेट करेगा। जैसे कि उसको एक यूनिट केक का और 12 यूनिट्स आइसक्रीम के चाहिए, तो वो क्या करेगा, अगर उसको 2 यूनिट केक के चाहिए तो वो क्या करेगा, आइसक्रीम कंपेंसेट करेगा, केक नहीं कंपेंसेट करेगा। केक इज द फर्स्ट प्रेफरेंसेस। तो दूसरा जो यूनिट वाला आने वाला है वो क्या करेगा, उसको कॉम्पेंसेट करके उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो एज इट इज रखेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको डायग्रामेटिकली दिखा है, जस्ट सी हियर। one cake is equal to 12 आइसक्रीम। देन कॉम्बिनेशन भी क्या हो सकता है, 2 केक्स इज इक्वल टू 6 आइसक्रीम। अगर वो 2 केक खाता है तो आइसक्रीम का लेवल कम हो जाएगा। 3 केक्स इज इक्वल टू, यानी एक प्रोडक्ट का प्रेफरेंस जब बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली दूसरे का कॉम्बिनेशन, दूसरे का प्रेफरेंसेस और दूसरे की नीड कम होती है। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। जब कॉम्बिनेशन थर्ड में क्या हो सकता है, आइदर ही कैन हैव 1 केक एंड 12 आइसक्रीम, और ही कैन हैव 2 cakes and 6 ice cream, or he can have 3 cakes and 4 ice cream. He can have 4 cakes and 3 ice cream. Means what? If the demand of one product increases, at the same time demand of the next product decreases. समझ में आ रहा है? And these two products are going to give equal amount of satisfaction. ये जो प्रोडक्ट हम लोगों ने जो चुने हैं इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन देने वाले हैं, और एक प्रोडक्ट का अगर डिमांड बढ़ता है तो इसका मतलब दूसरे प्रोडक्ट का डिमांड कम ही होगा। क्लियर अबाउट दिस? सो दैट इज डिनोटेड बाय द इंडिफरेंस कर्व। तो इसके हिसाब से यहाँ पे मैंने एक ग्राफ दिखाया है। सो ऑन एक्स एक्सिस आई हैव टेकन द फूड एंड ऑन द वाई एक्सिस आई हैव टेकन द क्लॉथिंग, कपड़े। जैसे कि हम लोगों ने पहले केक और आइसक्रीम किया था, लेट अस अंडरस्टैंड केक इज ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस देयर इज द आइसक्रीम। तो जैसे कि केक का मेरा डिमांड बढ़ेगा उसके हिसाब से मेरा क्या हो जाएगा, क्लोथिंग का या आइसक्रीम का डिमांड कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल सी हियर, इफ यू वांट टू हैव वन फूड, so one food and 12 ice creams are going to give me equal amount of satisfaction at A. Okay, when we add food up to 2, that time what is going to happen, my satisfaction level of food increases but the satisfaction level of this clothing decreases. So this is the my overall satisfaction. This is the satisfaction at which I will require 2 quantities of food and 6 quantities of clothing. Means what? Addition of one product decreases the addition of the utility of the next product. Another जो substitute है उसके प्रोडक्ट कम होते हैं। इन द सेम मैनर अगर मैं 3 यूनिट्स ऑफ फूड लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये केक का 3 यूनिट्स लेता हूँ, तो उसके हिसाब से मेरा आइसक्रीम की डिमांड, आइसक्रीम की यूटिलिटी मेरी कम हो जाएगी। सो टोटल सेटिस्फेक्शन विल बी इक्वल टू 3 यूनिट्स ऑफ फूड एंड 4 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग at C, and at D total satisfaction will be 4 units of food is equal to 2.5 units of clothing. Means what? When we add one product when we consume one product more, accordingly the importance of another product decreases along with this, and that is called as the indifference curve IC. It is denoted by IC. ये हो गया मेरा फूड और क्लॉथिंग के बारे में। I can take the next graph with respect to some other food. For example, Bisleri and Coca-Cola. That will be IC1. I can compare gold and silver. That will be IC3. So indifference curves हर एक product wise अलग-अलग होते हैं. They are not going to mix with each other. So this is the consumer's indifference curve. Okay. So if you draw the graph of this indifference curve, it will look like this. So IC1 is the satisfaction which I got from good 1 or good 2. For example, indifference, this is the indifference curve of me.
फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स, IC2 में भी जितना भी वही प्रोडक्ट सेम है, केक और फॉर एग्जाम्पल केक्स एंड आइसक्रीम, जितना सेटिस्फेक्शन मुझे केक एंड आइसक्रीम से मिलेगा वो मैंने यहाँ पे ग्राफ दिखाया है IC1, but the same level of satisfaction with respect to if you change the consumer at that time, उसका satisfaction मेरे से भी उसका satisfaction with respect to other consumer it may vary. थर्ड कस्टमर का भी कुछ अलग अलग ग्राफ रहे. So this, if we change the customer accordingly, you will get this indifference curve. If you change the product as well, you will get this indifference curve different manner. So this is how we are going to study the preferences of the product through indifference curve. हम लोगों ने marginal utility में भी देखा. So to study the marginal utility, to study the need of the product, we have studied the marginal utility and we have studied the indifference curve. So in this way, you can estimate the demand for your product. Okay. So that's it for today's lecture. We have finished our time. So let us stop here. So next lecture, we will go for the demand analysis. Thank you so much. Thanks for your time.